Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hello to all, to another class of educational psychology. In this class, we discuss another psychological concept which was given by Chomsky, and that theory is known as Chomsky's Theory of Language Development. So here we discuss the different language developmental processes and how these processes are maintained and conducted by different stages of our life. And before starting the class, first we discuss another concept as we individuals are considered as the most important and the valuable organism of this world, because we have some specific or special qualities, and among these qualities the most important and the very effective quality is the language. Okay, so we individuals are use language effectively to communicate with others, like जमिति कि आमे कहि परिबा जे अदर एनिमल्स जो माने आम सराउंडिंग रे अछंती दे शुड नॉट यूज प्रॉपर लैंग्वेज सिस्टम फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, बट एज ए इंडिविजुअल वी यूज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लैंग्वेज पैटर्न टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, जोटा कि आमे कॉम्प्लेक्स इन नेचर बोली भी कहि परिबा. तो जो कांसेप्टटा हमकु माने ई जो लैंग्वेज डेवलपमेंट रो कांसेप्ट हम पाखरे जोटा अछि, आमे जो लैंग्वेज को यूज करि परछंती प्रॉपर्ली और इफेक्टिवली, ड्यू टू दैट we individuals are considered as the highest or the topmost animals in our world. तो से language रो development केमिति कोन होउची आमे वर्तमान डिस्कशन करिबा. So let's start about Chomsky's theory of language development. So Chomsky was an American psychologist who presented, remember that point, American psychologist Chomsky, then who presented many ideas and fact related to psychology. Okay, तो Chomsky से विभिन्न प्रकार psychological concept ऊपर discussion करथिले, but the most influential and the most remarkable the commentary that is on his language development, जोटा कि world famous, आमे तांकु से language development रो concept पई से आमे तांकु मन रखिचंती. Okay, so Chomsky is also seen as a father of language development. Remember that point, father of language development, Chomsky. And he is also called as the father of modern language development. The father of modern language development by father of language development jodi padithibo, then the answer is Chomsky. So he is also seen as a linguistic or language psychologist. He was a practical thinker. According to Chomsky, the child has an innate ability to learn grammar and language. Okay, so every individuals have their own innate capability to learn grammar and languages. कहीं ना हमें जो देखिबा किछि तो हमें किछि जो illiterate individual को observe करिबा, जेतेबेले हमें illiterate individual को observe करिबा, then you found they have no formal educational competencies, but they can easily handle the languages while at the time of communication. तो सेमाने तांको पाखरे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नाही, फॉर्मली सेमाने लैंग्वेज पैटर्न को पढी नांती, फॉर्मली सेमाने ग्रामर को पढी नांती, बट जेतेबेले सेमाने कोन करूचंती ना तांको विभिन्न लोकन सहित कम्युनिकेट करूचंती, एट दैट टाइम दे यूज ग्रामर प्रॉपर्ली. सो ग्रामर डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट इज इनट एबिलिटी, तो सेटा ऑटोमेटिकली हम भितरे डेवलप हुए. एंड दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी. रिमेंबर साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी जोटा लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी बाय चॉम्स्की से जिनसटा, तो एथिरे ए कांसेप्ट को भी हम टिके मन रखिबा. देन Chomsky's theory of language development. This theory was propounded by Noam Chomsky in the year 1959. According to his theory, he believed that the ability to learn language is innate in the child. Individual ro innate capability. In simple word, the ability to acquire language is inherent in the students since childhood. तो childhood थारु एपर्यंत that is an inherent capability जो थरे कि आमे हमर लैंग्वेज को डेवलपमेंट करी जिबा और ऑटोमेटिक ही जिवो. And this ability to acquire language last for a certain period of time. जेमिति कि आमे कहबन जे लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ होउची, सेमिति नुह. लैंग्वेज डेवलपमेंट उटा पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ पर्यंत हबो, सेइठू बंद ही जिवो,
बंद हो माने हॉरिजॉन्टल तापरे जीवो द लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी ऑफ चाइल्ड आर इफेक्टिव टिल द फर्स्ट ईयर 5 वर्ष जो हमर फर्स्ट 5 वर्ष इन्फांसी पाखरु जो 5 वर्ष स्टेज पर्यंत लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टर हुए और रैपिड हुए आफ्टर दैट वी हैव फेस डिफिकल्टीज इन लर्निंग एनी लैंग्वेज because thereafter the ability of learn language keeps on decreasing that means जदि आमे वर्तमान आम कथा कहबा जे आमे समस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट करचंती आमे समस्त बीएड कंप्लीट करचंती तो आमे मैच्योर इंडिविजुअल आम निजको आमे कहउचंती so at that time if someone ask you to learn new type of language like german हो french हो बा अदर जो फॉरेन लैंग्वेज अछि बा हम इंडियन जो लैंग्वेज विभिन्न प्रकार लैंग्वेज अछि तो से सब लैंग्वेज को जो तुमको सिखिया पई कुआ हबो देन you face a lot of difficulties rather जेतेबेले तमे प्राइमरी स्टेज रे थिलो माने जेतेबेले प्री प्राइमरी स्टेज रे थिलो 5 वर्ष भितरे जो स्टेज रे थिलो जेतेबेले तो सेही स्टेज रे तुमको सिखाई तांदा देन दैट इज वेरी इजियर टू लर्न न्यू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस तो एई कथा किए कहउचंदी चॉम्स्की कहउचंदी एंड अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ए चाइल्ड हैज ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ओके एटा को आमे आगु गले आउ टिके क्लियरली डिस्कशन होबो तो खाली मु जिस्ट ऊपर जस्ट इट कहि दै जाउची जे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन जोठु की लैंग्वेज रे डेवलपमेंट हुए लैंग्वेज को एक्विजिशन हुए से सब कथा जो ब्रेन रो जो पार्ट रे हुए सेही पार्ट टाकू एलएडी पार्ट बोली कुहा जाय एंड विथ द हेल्प ऑफ दिस दे आर एबल टू लर्न एनी लैंग्वेज एज फास्टर रेट तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जा पाकर जते मोर से सेते फास्टर लैंग्वेज को एक्वायर करिवो दिस डिवाइस इज ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड और सीन ताकू रिमूव करि परिबानी कि देखि भी परिबा नाही It is a gift of natural ability. In simple word, it can be seen as a God's gift. तो LAD is seems as a God's gift. आमे ताकू देखि परिबानी, आमे ताकू बाहर करि परिबानी. That is a inbuilt capability, inbuilt quality जोटा कि हम ब्रेन रे ऑलरेडी तैयारी ही की अछि. Then Chomsky believed that the child's ability to learn language or grammar is innate, but the ability to learn that language is given by the environment is an complementary. Okay, and that is the environment and culture have a important place for the learning language. तो आम environment आम जो culture रे रहउचंती आम जो environment रे रहउचंती और जो culture रे रहउचंती जो ठीक जो भलिया language सेठी चाली छि बा जो भलिया language को लोक माने यूज करचंती तार इफेक्ट आम ऊपर बहुत मात्रा हुए in the process of language development. Then features of language Chomsky's theories कौन features देखिबा the first one is innate ability जोटा कि ऑलरेडी आमे डिस्कशन करिसंती सेटा हमर जोटा अंतर्निहित गुण जोटा आमे कहउचंती ओडिया रे innate ability according to Chomsky children develop the ability to learn language and grammar from childhood this conscious is genetic and universal okay that is universal or genetic in nature आमे समस्ते as a human being आम पाखरे से डेवलपमेंट ता होबो ही होबो that is an innate ability. Then the next one is importance of environment. आमे आगु जस्ट डिस्कशन करी गले in the process of language development the environment the importance of environment is also important or more तो आम environment जोठी रहउचंती सेही जगह रे जेमिति लैंग्वेज को आमे यूज करूचंती सेम प्रोसेस रे हमरो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होउची. Then Chomsky believed that although the ability to learn a language is innate the environment plays an important role in learning and developing the principles and elements. Okay, तो आमे जो धर जो आमे गुटे गुड एनवायरनमेंट रे रहउचंती भलो भलो लोक अछंती भलो भलो कथा कहउचंती देन ऑटोमेटिकली वी बा द इंडिविजुअल्स हु आर लिव इन दैट सराउंडिंग और इन दैट एरिया और एनवायरनमेंट दे शुड डेवलप गुड लैंग्वेज प्रोसेसेस आउ जोटी धर जो खराब कथा होउची खराब भाषा को यूज करा होउची स्लैंग्स यूज होउची तो ऑटोमेटिकली ता पाखरे से सब डेवलपमेंट होबो जदि से एनवायरनमेंट रे रहउतो एंड इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट इन व्हिच डायरेक्शंस आवर लैंग्वेज डेवलप्स. Then next one is the relationships in language. Chomsky believed that all the languages in the world and their elements are related to each other. तो जते प्रकार language हम ओडिसा रे बा सॉरी हम इंडिया रे देखुचंती बा all over world रे देखुचंती all are related to each others and according to him any type of language can be divided on the basis of noun verbs and adjectives. तो जे कोनोसी तमे language को नियो सब लैंग्वेज रो डिफरेंसेस बा कैटेगराइजेशन हमें कोउटु कोउटु करि परिबा नाउन रो करि परिबा वर्ब रे को नै करि परिबा एडजेक्टिव्स को नै की करि परिबा बोली चॉम्स्की कहले. देन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो कथाटा हमें जस्ट डिस्कशन करि गले एलएडी अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ए पार्ट ऑफ द ब्रेन जोटा को हमें एलएडी बोली कहउचंदी बिलोंग्स टू एलएडी व्हिच वर्क्स टू एनहांस द एबिलिटी टू लैंग्वेज
This ability to learn a language is very high in the first 5 years, and after that its effectiveness starts to decline. Already above ame discussion kari sarchandi. Then universal grammar. According to Chomsky, along with the language development, the learning of language, amount of grammar learning and correctness is in it also keeps on increasing. Okay, ame jette process language development ra amar process am agu ko agu jiba, same process re same sequence re you also found the amount of grammar learning and correctness also increasing. Okay, आम भितर जो ग्रामर प्रोसेस जो डेवलपमेंट होची, करेक्टनेस, लैंग्वेज को प्रॉपर्ली यूज करबा, इफेक्टिवली यूज करबा, ए सब कथा मते धीरे धीरे डेवलपमेंट ही जीवो. ही आल्सो reiterates that the process of learning language and learning grammar is universal in nature. Automatically hobo hi hobo. Then levels of language acquisition ko level le hochi. So according to Chomsky, students use two level of language acquisitions. Okay, two level of language acquisition. The first one is surface structure and the second one is deep structure. तो कौन surface structure और deep structure देखिबा, दीटा level ले language acquisition हुए. The first one is surface structure, next one is deep structure. तो first हमें surface structure को जिबा. According to Chomsky, in this structure students only acquire language of sounds and words of language, but they are unable to understand its meaning. Okay, unable to understand its meaning. आमे word रो sound को बुझुचंती, सुनुचंती, word को सुनुचंती, बुझुचंती, बुझुचंती माने आमे मने रखुचंती just, ताकू यूज भी करूचंती, but आमे तारो actual meaning टाकू बुझिबा पई चेष्टा करंती नै, unable to understand its meaning. They fail to explain the meaning of that word is in detail. For example, food, drink, mom, dad, etc. तो यार एक्चुअल मीनिंग कौन से सब कथा को आमे न सुनिकी न देखिकी जदि छोट पिलांग केस रे आमे मेनली कहिबा तो आमे ए वर्ड को यूज करूचंती. ओके, सो दीज वर्ड्स और दीज डेवलपमेंट बा ए जो वर्ड रे जो डेवलपमेंट होउची बा आमे कहि परिबा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस रे ए भलिया वर्ड जदि डेवलपमेंट होउची, देन वी फाउंड दैट लेवल इज कॉल्ड surface structure or surface level. Then the second one is deep level. In this, children begin to understand the meaning of words and sounds and become able to explain them in detail. Okay, तो surface level ले आमे केवल word को सुनुथुलु बा ता sound को सुनुथुलु ताकू यूज करूथुलु without understanding the meaning of the word. But here in deep level, we understand the actual meaning of the word or sounds, तापर आमे ताकू यूज करूचंती. Then under this, students are able to choose the best word to define the object. This is mature from the form of their linguistic development. Okay, that is the mature form of linguistic development. So these are the two levels of development, language linguistic development. तो वर्तमान आमे conclusion रे आसीले. तो ए concept रे बहुत कथा किछि नै, very basic concept रे ही क्वेश्चन आसीबो. तेणु एक एति कथा को ही आमे पढ़ी जिबा. तो नोम चॉम्स्की theory of language is a theory explaining the process of development of language, which does the work of giving a systematic descriptions of the development of language and ability to learn it. तो systematically केमिति हमरो development होउची language ता आ आमे केमिति ability to learn it, आमे केमिति भितरे आमो भितरे ability development होउची. About that concept Noam Chomsky provide his theory, and that theory is also called as theory of language development. Okay. Then according to Chomsky, the child has an innate ability to learn a language. That is an innate ability. मन रखिया सब बड़े इथुरु क्वेश्चन भी बहुत बार पचार चिया गुरु. But the work of learning and developing it is done by the society. Okay. तो जो learning process टा तो हमें जानी चाहिए basically हम society सिखाए. तो हमारा जो basic development language रो हमको हमरो innate ability हमें automatically सिखिबु. ताकू जतबे एलाबोरेट करिया कथा चिंता करछन, ताकू जतबे तार डीपर प्रोसेस को जिया कथा चिंता करछन्ती, देन से कथाटा हमकु सोसाइटी करई दबो. And the language acquisition device LAD plays an important role in the learning of the language of the student, which are more active in the first 5 years. तो 5 वर्ष भितरे LED टा बहुत माने जो एक्टिव थाए आमे ताकू फास्टली यूज करि पारंती. ओके, तापरे धीरे धीरे सेटा कमी कमी जीवो. So these are all about your theory of language development.